Hello, and once again, welcome to the ninth day of our 15-day online program in physical sciences for class 10. We have already finished 3 chapters of chemistry, chemical reactions and equations, acids, bases, and salts, and carbon and its compounds. A little bit portion is left out that will be covered today first, and then we will proceed to take up one topic in physics, that is electricity followed by electromagnetism. We are joined by Anubhav now, and others were there before. Subhasmita Samal joined now. Welcome all of you. And those who are watching, I think now no one is watching from the YouTube live video. But let me share my screen, and as usual, disable annotation by the participants and share my files. The file is the organic file. So we had learned that there are in general 5 types of organic reactions. One of them is substitution, pratisthapana. One atom or group will go, the other will come. In that point, we have seen substitution in alkane, and we have seen substitution in haloalkane. We have seen substitution in carboxylic acid and its derivatives. And in that connection, we had studied that the esterification can be possible by taking conc sulfuric acid and allowing an acid to react with an alcohol. When I say acid here in organic class, I mean carboxylic acid. Welcome, Shraddha Suman, better late than never. And after we prepare the ester, then we can have 2 options to break it down back to carboxylic acid and alcohol from which it was prepared. And there are 2 types of breaking down. You can use base. If you are using a base, then you are not getting a neutral acid. You are getting an ionic salt. Of course, you can convert this ionic salt into neutral acid just by acidification. And the same alcohol, this is called saponification of ester, and the other is catalyzed by acid. The actual job is done by water, but catalyzed by acid. But in this case, you get the same acid and same alcohol. We're seeing the displacement, substitution. This is, if we say this is B, this is C. Let us make it 1 and 2, 2 types of the hydrolysis of ester.
And we have gone up to C. This is D. Alcohol re pratistapana. Sodium ke potassium active metal dele, you get salt, alkoxide salt, and hydrogen gas. And then we studied the addition reaction, where a double bond, triple bond get added up to produce a saturated compound. If it is alkene, then only one addition step is required. But if it is alkyne, two addition steps are required. And also, addition of hydrogen, we have seen, addition of chlorine, bromine, where the solvent is carbon tetrachloride. And when we started adding and on a polar addendum like HCl, HB, or HI, then for symmetrical alkene, no problem. No problem. But for unsymmetrical alkene, we have to use the Markovnikov rule, where the negative part of the addendum will go and join, and where the positive part will go and join. You know, the negative part will join the carbon bearing less number of hydrogen atoms. That we already know. Alkyne has two steps. First, convert it to alkene, then alkane. Well, we know how to test an unsaturated hydrocarbon by using the red color bromine in carbon tetrachloride, and by adding a drop or two of this reagent, you'll find that the red color will vanish. Don't worry, I'm speaking in English. Just I told you that to acquaint you and to familiarize you in listening to English. I'm speaking slow so that you will not be sighing away when you join +2 and higher level. You also have the same spirit to speak in English, not simply listen in English, but speak in English without any iota of shyness. Now, we have also seen how a polar addendum is added to an aldehyde and ketone carbonyl group, negative part, positive part. We have seen the opposite of addition is elimination, Barjana Pratikriya, where two atoms from the adjacent carbon atoms, they combine and go as a neutral molecule, and there is another bond newly formed over and above the already existing single bond to make it a double bond. Or had it been already a double bond, then it would have been a triple bond. So this is elimination. We had seen the elimination of haloalkane using the Sadjev rule, where two products are formed if the halogen is at the internal position, at the double bond placed in an external position, and the other one where the double bond placed in the internal position. But this is less substituted, this is more substituted. So according to this rule, this is the major product. Someone asked, what is a non-polar solvent? I was saying that carbon tetrachloride is non-polar, although there are 4 dipole moment vectors. You'll learn very soon, maybe in our advanced, super advanced camp that we're planning to have. There, I will tell you in advance how to add up vectors in different ways. Now, we also, I think, yes, we have to start from here. Alcohol ro jodi tame ନିର୍ଜଳୀକରଣ କରିବ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କରିବ, ତେବେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ରୁ OH ତା ପାଖ କାର୍ବନ ରୁ H ଯାଇକିରି ହବ ଆଲକିନ୍, ୱାଟର ପଳେଇବ। ଏଇଟା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯେହେତୁ ହଉଛି, ତାର ଏଜେଣ୍ଟ ହଉଛି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ, ହିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ କୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଦେଇ ହିଟ୍ କଲେ ସେ ବାହାରି ଆସିବ
ethylene gas sepotku bahari asibo tome taku collect karibo epote by the downward displacement of water, or in any way you want, because it is a heavy gas. You can also put a test tube and air will be going upwards, because the upward displacement of air can also help you collect the heavy ethylene gas, because its molecular mass is 28. Dita carbon achi 24, 4 hydrogen achi 28. Whereas the of course no nitrogen gas, which is the constituent of air, is also 28, and oxygen is 32. So the average is the average is 28.8, the average molar mass of the air. So now you have to collect by the downward displacement of water. So it hala dehydrating agent ame no semti gote OH group ta bhitere achi sei subject rule eti kamo karibo. We will get two alkenes, gote bahar patua double bond padibo by the help of the hydrogen from this carbon. Also there is a possibility hydrogen from the internal carbon, but this is more branched. Mu koichi bhitor patua double bond jodi padibo, eta dita double bond ku dita branch lagichi. Eti double bond ku gote ethyl is taken as one branch. So eta measure habo dhara 80%, eta 20%, ki 90%, 10%. Now we'll be talking of another reaction very common in organic chemistry, is oxidation of the organic compound. For example, we take an alcohol and we use an oxidizing agent like potassium permanganate, potassium dichromate, or chromium trioxide, where chromium is in the +6 state, not Cr2O3, CrO3. That is an oxidizing agent. As you know, chromium is in the +6 state. Jodi nabo konosi gote jaraka, tahale alcohol ru gote ए ओ रु लागिछि जो H आउ ओ को जो कार्बन लागिछि सेथुरु गोटे H आउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गोटे ऑक्सीजन दबो मिसिकिरी वाटर चली गला जेहेतु गोटे चली गला एलिमिनेशन हे गला एठी गोटे डबल बॉन्ड पड़ी जीवो एटा गोटे एलिमिनेशन बट आको एलिमिनेशन अंडर रखंतनी एटा ऑक्सीडेशन अंडर रहे कारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करछ सो एठी गोटे डबल बॉन्ड पड़ी गला कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सो alcohol becomes a carbonyl compound, C double bond O. It है ethanol बा acetaldehyde है गला. अवश्य ए reagent उड़ा को इतने strong oxidizing agent तुम्हें aldehyde stage रे अटकी परिबने. से मन को मन टिके घुमई पड़िले से मन को मन आउ गोटे ओ दे दबो एठी लागि जीवो. सो अल्टीमेटली तमे को स्टेशन रे पहुंचबो जाईगिरी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेशन रे पहुंचबो इथानोइक एसिड हे जी. तेणु अन्य रिएजेंट अछि ताकू यूज कले एतेटा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज न करी तमे जदि टिके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करिवो ताले एल्डिहाइड स्टेशन रे गाड़ी रहि जीवो आगु को आ स्टेशन नाही. किंतु एते फास्ट चलिवो आउ चेन पुलिंग कले भी गाड़ी रहिबोनी. गाड़ी रहिबो few seconds by. Jemti I remember long ago I was about to catch the super fast Rajdhani Express. Well, that was a nightmare, a scary moment for me at that time, and when I remember that, it gives goosebumps as how God saved me that moment. It was so fast that it was coming from Bhubaneswar. That Rajdhani Express is a super fast express, and I was about to catch the train on an urgency basis, exigency basis. So I was talking to the
TTE to get me a ticket, immediately I will pay the amount. So just at that time, the train started. It's maybe 1 minute time it remained, maybe 1 minute or less than that. During that, I also talked with the TTE. So then I immediately, he said yes, but by that time, 30 seconds have gone, or maybe 1 minute has gone. So I caught the train, but it was going fast. It was an emergency visit. So I fell down, not outside, but inside. Luckily, inside, I fell down and I was saved. I could have fallen down outside, maybe inside the track, and maybe I would have died at that time. I'm immensely grateful to the divine. So why I was saying this, that it is a super fast, this oxidizing agents is a super fast express. So 1 minute, few moments will be there to remain as aldehyde. Otherwise, you will get carboxylic acid. Similarly, if you take methyl alcohol or methanol, then same thing will happen. You have to always write down. If you don't write down these notes in your copy, what I have shown you just by listening to this lecture, just like a history class, will not solve any purpose. You have to write down, which I won't allow you to do so now. Only what I will do, I'll give you some examples, some questions to answer. And immediately I will give the solution and tell you the answer. So methanol will give you formaldehyde, but that will not be staying for more. It will be converted to formic acid or methanoic acid. Now, but there is another reagent nowadays used called PCC. I fondly call Pradesh Congress Committee, but actually it is pyridinium chlorochromate. Forget about the composition of this. You will be knowing in your class 12 program, or maybe in advance if you are in a good place. Pyridinium chlorochromate, PCC. That is a famous reagent. If you use that, it's a mild oxidizing agent, then alcohol will be converted to aldehyde and there will be no further oxidation. Gadi rahijibo Sakigopal station re, au puri jiboni. So, Semiti, just I wanted to tell you because you are all guys are very good. Supposing ame au gote type ro alcohol naba, supposing ame naba propan 2-ol naba. Seti sina dita hydrogen thila boli seti in the previous example amar kon thila dita dekho dita hydrogen thila ei carbon ku dita lagichi eta to tinta lagichi ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆଲଡିହାଇଡ୍ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ହେଲା ମାନେ କାର୍ବକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ହବ ଯଦି ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ OA ୟୁଜ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 2 degree ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ତମେ ଯଦି ଏଇ ଭଳିଆ ଆଲକୋହଲ ନବ ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଛି, ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଥାଏ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ বা ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ କାର୍ବନକୁ ଲାଗିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଲକୋହଲ। ତା ଜାତି ଆଲକୋହଲ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତି ଭିତରେ ପୁଣି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଭିତରେ ପୁଣି ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଖରା ମଝିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ। I was really amazed when I had a sense. I found that in every caste there is a caste. To my utter surprise, I found different castes. While all human beings are alike, but how they have created this farce caste, and then in every caste there are subdivisions. So I'm just kidding you by saying that alcohols have 3 castes, alcohol subcastes. So this is called a secondary alcohol where carbon
bonded to OH group has only one hydrogen. But if the carbon is bonded to at least 2, or maybe 3, only in case of methanol it is 3, otherwise 2, then these alcohols are called primary alcohols or 1-degree alcohols. They produce aldehyde and then carboxylic acid. And if you use PCC, then arrested at the aldehyde station. But if you take 2-degree alcohol, and you have to use, in this case, strong oxidizing agent, and there is no other station, you can tell me this H and this H, they will go as water, and O from the oxidizing agent. So there is a double bond here. Can anyone tell me what kind of compound will be formed? को जातिर compound formation हबो सेठी aldehyde होतिला 1-degree alcohol रे 2-degree alcohol रे कोन सृष्टि हबो? What is the difference in the nature of the product? Yes, Om Prakash. Sir, ketone. Yes, precisely. एठी ketone सृष्टि हबो. के कहि परिबो आ नाटा कोन? Raise your hands or write down. से लिखिची ketone. Yes, Rudra लिखिची, Arjo लिखिची. Well, लिखिले भी भलो, because you know that this is being recorded. I am using for the purpose of future use. Gautam Panda, welcome. You are watching from outside, from the live streaming video. Welcome to you. Perhaps you are a teacher, so please watch us and see how we are performing. So yes, the name is propan-2-one. 1, 2, 3. So the good name is propan, and 1, 2, 3, 2-one. But nobody writes 2-one. 2 is obvious. आउ से 3 ही परिबोनी कि 1 ही परिबोनी. 3 1 3 तो नुहे 1 हेले सेटा aldehyde हे जिवो. So let's have a habit of writing 2. I don't say don't write, because in other cases you have to write the locant. So why not this? But who can tell me what is its nickname, the popular name? सबुठु तार लोकप्रिय नाटा कोन? प्रोपानोन कहिले बहुत अधा लोक बुझी परिबेनी, किंतु yes, शिव सुंदर is correct. It is acetone. से पढ़िछि लिखिछि, नॉन लिखिले किछि हबोनी. खाली साइंस जिंस जते बुझी जीवो क्लास रे, तमे जदि ताकु न लिखिबो, हाथ रे तमे नोट्स न करिवो, तबे मने रहिबो नाही, जते तमे ब्रिलियंट हे थाओ. देन असला रिडक्शन. रिडक्शन ठीक उल्टाटा. aldehyde हेतिला कि ना प्राइमरी अल्कोहल, वर्तमान aldehyde को हमें गुटे रिड्यूसिंग एजेंट नबा. The famous reducing agent na suni tha is lithium aluminum hydride. It's a complex dita metal au hydride H minus 1 state rach. We jani cha hydrogen when it is combined with metals has a charge of -1 or oxidation state of -1. Lithium ta +1, aluminum ta +3, and chatta hydrogen ta 4 -4. So lithium aluminum hydride को बहुत कॉमनली कहती LAH ला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. एटा के लिखंती LAH लिखि देला माने लोक जेकोनस लोक भाबिबो इट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एंड इट्स ए विजारक माने रिड्यूसिंग एजेंट. से हाइड्रोजन जोगेबो, सो दैट जोटा हेइथिला एलिमिनेशन टाइप रो हेइथिला ऑक्सीडेशन टा, इटी एडिशन टाइप हबो रिडक्शन टा. गोटे हाइड्रोजन एठी लागिबो, गोटे हाइड्रोजन एठी आसीबो. सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ए प्राइमरी अल्कोहल. सो इथेनॉल on reduction by lithium aluminum hydride will give you the alcohol, and that too primary alcohol. काहे कि ना तुमको कहि सालेनी लास्ट 2 years जते बेले पूर्वरु जते बेले मु करिथिली एई प्रोग्राम फॉर क्लास 10, सेते बेले मु अल्कोहल मानकर सब कास्ट कहि नथिली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. सो एठी एई वर्ष तम पई कहि देली काहे कि ना तुमे एते भलो बिली मते लागुची. सो एटा आरी पई एटा 1 डिग्री अल्कोहल बा प्राइमरी अल्कोहल.
किंतु जदि कीटोन नब ठीक उल्टाटा सेकेंडरी अल्कोहल टा दउतला कीटोन को रिडक्शन कले तबे एठी गोटे हाइड्रोजन लागि जिवो एठी गोटे हाइड्रोजन लागि जिवो डबल बॉन्ड टा सिंगल बॉन्ड हे जिवो सो इट बिकम्स ए 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपान 2 ऑल अच्छा तुम जदि कहबो एठी प्रश्न पचारि थांत पचारु न पचारि पारि थांत 2 डिग्री अल्कोहल सर कहिले 3 डिग्री अल्कोहल नेले कोन हबो 3 डिग्री अल्कोहल टा होची का माइंड रे थिला 3 डिग्री कथा पचारिबा कि हाथ टेकिलो जूम हैंड वैजयंती राउतकर थिला आर्य साहुकर थिला रुद्र साहुकर थिला so multiple students participants had their doubt 3 डिग्री अल्कोहल को नेले कोन हबो सेही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जे दबा तर 3 डिग्री अल्कोहल टा कोन 3 डिग्री अल्कोहल होची किछि हाइड्रोजन लागि नथिबो एठी नो हाइड्रोजन एठी गोटे स्टार मारुची टू शो यू जोठी ओएच लागि थिबो सेठी आउ किछि हाइड्रोजन लागि नथिबो एठा ला 3 डिग्री अल्कोहल ताकू ऑक्सीडेशन करले नो रिएक्शन इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन तेणु मु कहलिनी कारण भाबिली जे तुमरो डाउट हेथिबो सेटा कोन हबो सेतमे कहि देली एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन पर किछि हबो राइट तो वर्तमान रिडक्शन कथा पडिथिला रिडक्शन आमे कर देले जे एल्डिहाइड दबो अल्कोहल माने प्राइमरी अल्कोहल कीटोन दबो सेकेंडरी अल्कोहल ठीक उल्टाटा आउ कार्बोक्सिलिक एसिड नेले भी अल्कोहल हबो ठीक एल्डिहाइड बलिया व्यवहार करिवो सेति पई आउ एक्स्ट्रा दीटा हाइड्रोजन दरकार कारण दीटा ऑक्सीजन अछि तो तेणु एठी गोटे लागि गला किंतु ए ऑक्सीजन टा को विदा करिया पड़ियो दीटा हाइड्रोजन मिसले तो वाटर हेकी जीवो सो गोटे एडिशन हे गला गोटे सॉरी जोड़े हाइड्रोजन एटम एडिशन हे गला आउ जोड़े हाइड्रोजन एटम ओ टा को आनी करी वाटर करिवो सो चारिटा हाइड्रोजन दरकार सो सेही एका जिंस हबो जोटा एल्डिहाइड रे होतला एस्टर मध्य रिडक्शन हे परिवो सेही ला किंतु एठी बॉन्ड भांगी जीवो एठी सी सिंगल बॉन्ड ओटा भांगी जीवो दीटा अल्कोहल हबो ए फोटो साइड टा गोटे अल्कोहल जहा थिबो दीटा कार्बन अछि एथेनॉल एटी गोटे कार्बन अछि मेथनॉल सो दुईटी अल्कोहल सृष्टि हबो एस्टर रु कार्बोक्सिलिक एसिड रु गोटे अल्कोहल एल्डिहाइड बलिया एस्टर रु दीटा अल्कोहल तापरे शेष हला दहन प्रतिक्रिया हम जानि जे एटा एक्चुअली एटी भूल लिखाई छी कोन भूल लिखाई छी कहलो होबा कथा O2 OH2 लिखि मिथेन हो इथेन हो प्रोपेन हो प्रोपिन हो प्रोपाइन हो जेकोसी कार्बन हाइड्रोजन इवन ऑक्सीजन थाओ एथेनॉल हो नाइट्रोजन थिले अलगा गैस ता सहित अलगा गैस बाहरियो NO KNO2 डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस ऑक्सीजन अछि कम ऑक्सीजन अछि बाहरियो किंतु कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जदि खाली थिबो संपूर्ण दहन रु एई जोडी जमीन से बाहरियो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किंतु असंपूर्ण दहन रु कार्बन मोनोऑक्साइड बेले बेले बाहरियो केतबेले फॉर्माल्डिहाइड बाहरियो केतबेले फॉर्मिक एसिड बाहरियो केतबेले कार्बन बाहरियो बहुत कमी गले कार्बन बाहरियो दीटा कार्बन थिले एसिटिक एसिड बाहरियो एमटी अनेक प्रदूषणकारी गैस सृष्टि हेई थाए तो वर्तमान this chapter is closed and we are still having how much time so more than 20 minutes we have so yes we will close any further discussion on organic you study your book you will find them very old modeled because it is written for average students and not for those students whom the uranium our society finds or tries to locate. The uranium awardees or those who watch us or take training from us, they are supposed to have the passion to learn something in advance. Something in advance. In a very natural way, not in a very, pressured way. तुमको जबरदस्ती किए पढ़ोची से नो.
सेटा हले छाड़ दवा कथा. So now आजिकार जो विषय वस्तु होची एटा फिजिक्स. तो चलो आरंभ करिबा. आम गहन रे प्रीतम बेहेरा अछंती आउ आम गहन रे पहुंची गलेनी आरजे कुमार साहू. ओके, आमर आजिकार विषय वस्तु होती स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जोटा तुमरो कोर्स रे ना. अनफॉर्चुनेटली जो माने बाहरे देखुचंती यूट्यूब रे बा जस्ट देखिबा आरंभ करचंती, फॉरवर्ड करंतुनी. You will know the basic concept of electricity. Unless you have a basic foundation of static electricity, your knowledge will be superfluous. Khali Ohm's law apply kari anka kar dalo. See, that is not a big deal at all. The real concept that you will miss if you don't study something about static. Let us complete static today. This 20 minutes and the remaining 50, if that will be completed, then we will immediately start the current. I am ready. So we'll be studying what is Vaidyutika Karya, Sthira Vidyutre, what is electrical work, what is Vidyut Vibhava Shakti, electric potential energy, what is Vidyut Vibhava, electric potential energy ta kati jiva, what is the potential difference Vibhavantara, এবং how charge flows to produce a current, flow of charge. So हमें static रो current को जीवा, हमारा उद्देश्य होची current को जीवा पाई, किंतु हमें उठे जॉनी हमें करिवा. तुम्हें जानी चो इटा कहिबा बाहुल्य जे oppositely charged bodies मानकर भितरे आकर्षण हुए, विपरीत धर्मी चार्ज माने पाखापाखी आसी गले सेमानक भितरे आकर्षण हुए, पाखापाखी से माने पळांती. समधर्मी चार्ज, like charges repel, unlike charges attract. Positive charge पाखापाखी हे गला, negative charge पाखापाखी हे गला. से माने विकर्षण करिवे. That you know, it's not a big deal at all. तो एडी से चित्र रे देखाई छै विकर्षण आकर्षण, negative positive विकर्षण. They will go away from each other, परस्पर ठु दूरे जिवे. किंतु जदि पॉजिटिव नेगेटिव थिबे ताले परस्पर पाखकु निकटकु पळे आसीबे. मु स्फीयर देखौची, तुमे ताकू भाबो जे सेटा उठे पॉइंट चार्ज at the center रे सेटा अछि. All the charge is localized at one point and we are taking point charge. मु देखाबा पे गोटे विराट बड़ स्फीयर करछि. A uniformly charged sphere behaves like a point charge. Okay, even then I have a real sphere, सत्सटिका sphere रे surface ऊपर चार्ज गुडा अछि, but it behaves like a point charge, as if all these charge is concentrated at the center of this sphere. Now, well, Anubhav says, Anubhav is a very spirited guy. He says that, good morning, sir, it is important to learn the trivial name or common name of the organic compounds. It's a question mark. Well, yes. And don't be scared, डरी जाओनी, जे trivial name केवल कुनी कुनी छोटो छोटो मॉलिक्यूल मानक पाई अछि. सबु फैमिली रो दि चारिटा मैक्सिमम पांचटा पाई अछि trivial name. आउ अन्य मानक पाई हेई पारिला नाही बोली hundreds and thousands compounds तयारी हला. ते trivial ना आई परिवनी. तेणु IUPAC नेम को लेखिबा को बाध्य तमे. छोटो छोटो मिथानॉल जगह मिथाइल अल्कोहल, इथानॉल जगह इथाइल अल्कोहल. So let us not talk about chemistry, although maybe I am wrong. Usually a physics person teaching physics will be having some sort of alienation from chemistry, because that for him it will be a very
monotonous subject. And for one who is teaching chemistry, he will be finding physics little monotonous, a lot of mathematical work and all these concepts. But he will be definitely not in disagreement with the fact that physics has more concept-based learning skills compared to chemistry. Chemistry has more than 50% memory, but after understanding, memory will supplement. But physics is 100% concept. Then everything comes automatically. Now see, we're talking about electric potential at a point. धर मुझे बुझे दउची धर गोटे स्टैटिक चार्ज अच्छी तार मान होची प्लस कैपिटल क्यू एवं तुमे गोटे धरिच आउ गोटे प्लस चार्ज स्मॉल क्यू एवं तुमे बहुत दूर रे अछ से क्यू टाकू स्मॉल क्यू टाकू तुमे दूर रे रखिछ सो दैट कैपिटल क्यू मते किछि ताको रिपल्सन करूनी सबु जिनसर गोटे फील्ड अच्छी मैग्नेट रे जेमति मैग्नेटिक फील्ड सेमति इलेक्ट्रिक चार्ज रे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी से फील्ड भीतर को आसिले फोर्सटा जना पड़िबो आकर्षण कि विकर्षण से फील्ड भीतर को आसिले जना पड़िबो तेणु जते दूर रे अछि ताकू आमे कहू इनफाइनाइट डिस्टेंस असीम दूरता ता माने नुओ जे गोटे इलेक्ट्रिक चार्ज को फिक्स रखिछ एठी इनफाइनाइट डिस्टेंस माने अमेरिका चंद्र मंगल इट्स नॉट लाइक दैट दूर रे जोटी गोटे आउ गोटे चार्ज ए चार्ज रो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील पारिबो नाही सेही डिस्टेंस रे इनफाइनाइट डिस्टेंस ताको कहंती असीम दूरता सेठी धरा जाईची वैज्ञानिक माने धरि नै चंती जे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रिलेटिवली किछि तो इंटरैक्शन नाही तेणु तार सिस्टम रो पोटेंशियल एनर्जी जीरो सिस्टम रो किंतु जतबेले पाखु पाखु आसीबो मु नेली पाखु पाखु त इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर को आसीला जे दीटा को पॉजिटिव चार्ज अछि विकर्षण होबो तेणु तुमे हाथ रे धरिच तुमे जबरदस्ती नबो त माने तुमे किछि काम करिवो तो व्हेन वर्क इज डन ऑन द चार्ज द मूविंग चार्ज एटा स्टैटिक चार्ज एटा मूविंग चार्ज तमे मते पचारिबो सर आपण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढौचंती आउ कोन कहलेनी मूविंग ना मु कहूची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो कांसेप्ट दवा पई हमें गोटे चार्ज को स्थिर रखिबा जोटा बड़ बेसी मात्रा रे अछि गोटे कुनी चार्ज ताकू हमें ये करबा राइट ताकू हमें मूव करबा एठी से निजे जीवनी हमें ताकू बाह्य कारक एक्सटर्नल एजेंट लाइक यू एंड मी विल ड्रैग इट टुवर्ड्स द स्टैटिक चार्ज सेबले जो ता ऊपर कार्य हबो ता ऊपर बाह्य कारक तो कार्य करिवो मन रखि था कार्यर साइन अछि w हैज ए साइन हियर w रो साइन होची नेगेटिव तेतबेले ता ऊपर बाह्य कारक लाइक यू एंड मी काम करिवे से छाए छाए आपे आपे जीवनी सेतबेले वर्क विल बी नेगेटिव वर्क बट पोटेंशियल तर बढ़िबो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तर बढ़िबो सो वर्क डन एंड पोटेंशियल दे आर ऑपोजिट साइन यदि वर्क डन ता नेगेटिव हला ताकू जेते पाखु पाखु नबो वर्क वर्क करी करी ता ऊपर चली थिबो तुमे सेते तार पोटेंशियल एनर्जी बढ़िबो काहे की ना तम धर हाथ छाडी दबो तार एते अधिका पोटेंशियल एनर्जी हे गलानी जहा को हमें ग्रेविटेशनल फील्ड रे माध्याकर्षण जो फील्ड अछि से फील्ड रे जहा को हमें स्थितिज शक्ति बोली कहू एठी स्थितिज शक्ति नाही सेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कहंती खाली पोटेंशियल एनर्जी एटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेटा कोन से समुद्र पतन रो उच्चता ऊपर डिपेंड करेनी केते पाखरे अछि से स्टैटिक चार्ज रे गोटे मूविंग चार्ज केते पाखरे अछि केते दूर रे अछि ए दीटा को चार्ज रो साइन ऊपर डिपेंड करे तोर आकर्षण बल ही थांता अलगा ही थांता हमें डिस्कस करबा किंतु विकर्षण बल जेहेतु अछि तुमे नौच w टा नेगेटिव हबो एठी देखो w टा नेगेटिव हबो तेणु पोटेंशियल एनर्जी बढ़िबो केमी जानिबो बढ़िबो बोली तमे गोटे पॉइंट रे नै 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 जा छाड़ दो
से जेते पाखु को नहीं जीव तार पोटेंशियल एनर्जी सेते अधिका हबो से छाए छाए जो ये हबो रिपल्सन फोर्स जो अच्छी हाई रिपल्सन फोर्स रे से अच्छी तबे ताकू जबरदस्ती धरिच तार पोटेंशियल एनर्जी सुप्त एनर्जी ता देरे एते गच्छित अछि से फटकिन पळेबो एवं सेटा तार काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट हे जीव गतिज शक्ति को कन्वर्ट हे से पळेबो ऑन द अदर हैंड इट इज द नेगेटिव चार्ज नहीं थांतो कि एठी क्यूटा नेगेटिव थांता एका कथा दीटा को पॉजिटिव बा दीटा को नेगेटिव रहिले मु जहा कहली वर्कटा नेगेटिव हबो जेते पाखकु नबो एवं पोटेंशियल एनर्जीटा सेते सेते पॉजिटिव हबो वर्कटा सेते सेते नेगेटिव हबो -4 -5 -10 -100 -200 किंतु पोटेंशियल एनर्जी +4 +10 +200 एमती सेति के वैल्यू एका किंतु प्लस बढ़िबो माने पॉजिटिव सेति पई वर्कटा को नेगेटिव धरा जाईची इट्स साइन कन्वेंशन अच्छा मुठी एठी कहि दि काले भूली जीवी से जदि आमे एकक चार्ज नबा क्यूटा +1 चार्ज उटे यूनिट चार्ज नबा 1.602 into 10 to the power -19 कूलम जदि गोटे एकक चार्ज नबा इनफाइनाइट डिस्टेंस रु टू ए पर्टिकुलर पॉइंट तर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस रु पीक पर्यंत नेले तबे जेतिकी कार्य करिवो बा जेतिकी पोटेंशियल एनर्जी गच्छित हबो बा लॉस हबो सेटा हला तार विभव U by Q U by Q Q माने तार टेस्ट चार्ज ता जदि Q हुए बाई Q कर देला माने एकक चार्ज पिछा जेतिकी पोटेंशियल एनर्जी आइदर कमिबो बा गच्छित हबो सेटा को कहंती विभव पोटेंशियल तार यूनिट चेंज हे जिवो बिकॉज वर्क डन रो एनर्जी जहा W रो यूनिट जहा तमे नवम श्रेणी रे पढिछ W रो वर्क डन रो यूनिट जहा एनर्जी रो यूनिट सेया जूल किबा कैलोरीज ए टाइप रो किंतु बाई Q हला बेलकू हम देखिबा तळे चार्ज डिवाइड हे जाउची जूल्स पर कूलम U by Q small q so सेटा हे जीवो वोल्ट so joules per coulomb हबो आ गुटे यूनिट वोल्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टाकू डिलीट कर दबो सेटा ना हे जीवो काली विभव शक्ति नु विभव पोटेंशियल तार यूनिट होची वोल्ट तो सेमिति एठी देखो गुटे नेगेटिव फिक्स्ड चार्ज अछि गोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें मूव करूचे इनफाइनाइट डिस्टेंस रे जाउची गले मन को मन आकर्षण हबो जते बेले निजे चार्ज टी निजे काम करिवो निजे सेते बेले W टा साइन हबो पॉजिटिव एवं ऑटोमेटिकली जेंति U टा W रो अपोजिट साइन तनो U टा नेगेटिव हबो ता मन ताकू जे छाडी दबो तार पोटेंशियल एनर्जी कमी जीवो एठी बॉडी जाउथला तो जबरदस्ती नेले +2 +3 +5 +6 +7 +8 W टा वर्क डन टा -2 -3 -4 एम होतला किंतु U टा +2 +3 +4 +5 एम होतला किंतु एठी ठीक उल्टाटा एठी तमे हाथ मारियो को पड़ियोनी तमे गोटे जगह रे रखि दियो छाड़ दियो तमे देखो कमाल से मन को मन टणा है कि जीवो टणा हेले तार वर्क डन टा पॉजिटिव एवं पोटेंशियल तार सरी जाउची तोर एठी अछि तुमे चाहिबो पुनी बैक करियो को पुनी बाह्य कारक दरकार तण पोटेंशियल तार कमी जाईची बोली सेति पई तुम से मन को मन जाई परियो नाही ताठू दूरता को बाहर तुमको हाथ मारियो को पड़ियो देन ओनली इट विल गो फ्रॉम वेयर इट केम तेणु तार पोटेंशियल कमी जाउची से निजे किछि काम करि परियोनी किंतु पोटेंशियल बड़ी कले ताको छाड़ी देले से निजे भटकिनी पळी जिवो एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी जोटा ग्रेविटेशनल रे मते पढिचो जो स्थितिज शक्तिटा जदि कमी जीवो गोटे स्टोन टा तळु को पड़िले से जति कमिवो सेति तार पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्टेड हबो एठी मते सेया किंतु एठिकार पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज शक्ति कहतनी विभव शक्ति एटा दीटा चार्ज गोटे
static charge ଆଉ ଗୋଟେ moving charge तार दूरता एवं तार साइन ऊपर डिपेंड करे एवं से जाउची बाहर को जाउची कि पाखु को आसुची ता ऊपर डिपेंड करे मु उल्टा क्वेश्चन आउ टिके परे पचारिबी वर्तमान बाहर देखौची 15 जन व्यू करचंती वेलकम ऑल ऑफ यू those who are watching and those who are watching now, I mean now means in future. Many of the guys are watching later in their free time. They are sequentially coming from the day 1 2 lectures. Then I'm finding every day there is a gradual increase in the number of viewers. And towards the end I find the number is the least, and I'm sure it will increase with passes of time. And what I was saying, जदि ए केस रे या हला मु प्रश्न मोर जदि गोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव स्थिर चार्ज पाखु को आनिले वर्क डन टा नेगेटिव हबो बाह्य कारक कार्य कले सेटार साइन कन्वेंशन होच नेगेटिव किंतु यू टा पॉजिटिव हबो तार पोटेंशियल एनर्जी बढ़िबो एंड जदि ऑपोजिट चार्ज कोना जीवो जे हो एटा प्लस एटा माइनस हो कि एटा माइनस एटा प्लस हो टेस्ट चार्ज को सब बळे पॉजिटिव करंती सेति पई मु एटा को माइनस कली तबे अट्रैक्शन बढ़िबो सो एठी वर्क डन टा हबो पॉजिटिव जेतेबेले वर्क इज डन बाय द चार्ज सेतेबेले पॉजिटिव तार साइन हबो एवं पोटेंशियल एनर्जी रो साइन हबो नेगेटिव अच्छा मोर क्वेश्चन हला जदि गोटे पॉजिटिव चार्ज को एठी अछि पॉजिटिव चार्ज होची स्थिर चार्ज पॉजिटिव चार्ज ता तुमे एठी छाडी देलो एठी थिला तुमे आनिथिलो से कथा भूली जाओ तार पोटेंशियल एनर्जी बॉडी बॉडी चली थिला इनफाइनाइट डिस्टेंस रे जीरो थिला बॉडी बॉडी की एठी कानिचो एठी छाडी दियो तापर कोन हबो एवं तार पोटेंशियल एनर्जी तार वर्क डन रो कोन साइन हबो एवं पोटेंशियल एनर्जी रो साइन कोन हबो के कहि परिबो लिखि दियो तुम जानी नब वर्क डन टा जदि पॉजिटिव हैला यू टा नेगेटिव जदि वर्क डन टा नेगेटिव हैला यू टा पॉजिटिव तो वर्तमान तुम्हें चार्ट बॉक्स रे लिखि दियो जे जदि तुमे गोटे पॉजिटिव चार्ज एठी अछि तुमे हाथ रे धरि कि पाखु पाखु नउथलो गोटे स्टेज रे धर पी पॉइंट रे तुमे हाथ काढी देलो then what will happen and what will be the sign of W and U eta jodi न कहि परिबो anyone watching directly from the YouTube can also write down in chat box. I'm addressing not only to the Zoom participants but also to the YouTube live streaming participants. No hand raised. हाँ रुद्र खाली लिखी चंती हाँ लिखी सारे या लिखी चंती रुद्र लिखी चंती पछु को चली जीवो ओ वर्क डन टा हबो पॉजिटिव एंड यू हबो नेगेटिव देखिबा कोन होची it will get repelled अनुभव I am so sorry to tell you सेटा तमे ठीक लिखिछ किंतु आउ गोटे पचारि थिली साइन कोन हो साइन ऑफ W एंड U लिखिलो नै वर्क डन ता पॉजिटिव हबो U ता नेगेटिव हबो ओम प्रकाश लिखिचंती श्रद्धा लिखिचंती मध्य वर्क डन ता पॉजिटिव हबो एवं एनर्जी ता पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हबो एवं ठीक लिखिचंती अनुभव तमे केवल साइन देलनी यस जेहेतु दीटा को पॉजिटिव छाड़ देला माने रिपल्सन तो सब बळे अछि तमे सिना रिपल्सन को ओवरकम करिकरी तुमे काम करिकरी ताको पाखकु नउथुलो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ुथुला गच्छित होइकरी थिला सो जेति की गच्छित होइकरी थिबो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस रे एठी काणी थिबो सेति की शरीर को आरंभ करिवो सो जते बळे मन को मन से जीवो जानिलो रिपल्सन होउची छाड़ देइछ हाथ मन को मन जाउची माने वर्क डन टा पॉजिटिव वर्क डन टा पॉजिटिव हला माने पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो माने पोटेंशियल एनर्जी कम होची पुणी गुडे बाट गला परे ताको आनिबा को चाहिबो से मन को आसीबनी तमे हाथ मारिया को पड़ियो हाथ धरि कानिया को पड़ियो सिमिलरली आ गोटे क्वेश्चन पचारिबी जदी
ଏଇ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଟା ତମେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ ତ ହାତ ଧରି ନଥିଲ, ଛାଡି ଦେଇଥିଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହାତ ଧରିକିରି ତମେ ଦୂରେଇ ନବ। ଦୂରେଇ ନେଲେ କଣ ହବ? what will happen to the test positive charge when you take it? well, this take it ଖାଲି ଗୋଟିଏ take it away from the negative static charge. tell me. ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜଣଙ୍କର ଭଏସ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। raise your hands କିଏ କହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ, I have to close. ବୈଜୟନ୍ତୀ ବାଳିକାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି, ଅନମ୍ୟୁଟ ତ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ। ବୈଜୟନ୍ତୀ କୁହନ୍ତୁ। सर ता पाक सर या फील्ड जेति पर्यंत थिबो सेतिकरो ताको आनला बेलको सेतरे अट्रैक्शन थिबो, सेतरे वर्क टर्न ता नेगेटिव थिबो, तेनु एटा पॉजिटिव होबो। मो थिबो कथा कहूनी, मु कहूची एइटाकू बा पटकू दूरेबाकू हेले तमे हाथ धरिबाकू पड़िबो, नहले से हबनी। then बाह्य कारक कार्य वर्तमान करिवो माने what will be the nature of what is the sign of W? सर माइनस। yes, correct. जेतेबेले बाह्य कारक कार्य करिकि ताको बा पटकू नबो, तबे वर्क डन ता जदी माइनस हला यूटा पॉजिटिव हो। तन वर्तमान पोटेंशियल एनर्जी गच्छित होइकि रहिबो, दूर को नै जो जस्ट छाडी दबो जेतेबेले से मनु पळे आसे, बिकॉज़ तार पोटेंशियल एनर्जी सेठी गच्छित होइकि अछि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, then that will be converted to kinetic energy. So with this we conclude this first session, and we will be resuming as usual at 7:05. I will be opening the Zoom, and others watching from YouTube will be joining at 7:10. Bye bye.